about the ethics. You heard about the word ethics, right? So what comes in your mind once you listen this word ethics? What comes in your mind first? Anyone can tell. Principles. Yeah, please. Principles. 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 Very good. Then next. Okay, no problem. So, yeah, please. Antan is telling something. Please. Yeah, sir, I think ethics we can say as a professionalism of a person. Okay. Okay. क्या सही है डिसीजन, कौन सा डिसीजन गलत है, कैसा हो गया. Okay. Okay. See, we are comfortable in any language. Okay. But for me, Gujarati, English, and Hindi I can speak. Huh? So with these three language, we are comfortable. So don't worry about English or language about language barrier. हम लोग हिंदी में भी बात कर सकते हैं, गुजराती में भी कंफर्टेबल है. So whatever the language you prefer, no problem. Okay. तो अभी हिंदी में भी बता सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? Okay. So once this ethics will come in your mind, okay, as Antanu says, some personal, then principles, as Roy said, principle, right? So our personal ethics are there, like in our families, in our relations, we are thinking like, okay, what? I am very honest. I want to be always honest. मुझे हमेशा प्रामाणिक तरीके से काम करना है, वो मेरा एथिक्स है कि मैं ये करूंगा. तो एथिक्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं. क्या सा लगता है आप लोगों को? अच्छा है एथिक्स? ऑलवेज अच्छा रहता है एथिक्स, या बुरा एथिक्स भी होता है? क्या हो सकता है आप लोगों को? So ethics can be bad, ethics can be good as well, right? So हमको लगता है हम honest है, मैं बहुत फ्रेंडलीनेस हूँ, मैं मुझे दूसरों का रिस्पेक्ट करना अच्छा लगता है. So some personal ethics are there, but ethics can be bad as well. Like okay, some guys are thinking. So the same ethics, whatever you are feeling, you can follow in the professional life as well or not. And what will happen if you follow, right? See, if something you are thinking like मुझे तो ऐसा ही करना है, मेरा तो काम करने का तरीका ही यही है, मैं तो पर्सनल लाइफ में ऐसा ही हूँ, so the same thing you can follow in your professional life, yes or no? Why no? Because see, this is your ethics, right? You have to be strict on your ethics. Then why you are not following in your professional life? What is the reason? What is the reason? The reason behind on this is कि हमको हमारे जो भी एथिक्स है वो हमको हमारे लिए ठीक है, बट फॉर इंडस्ट्री, फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच वी आर वर्किंग, दे हैव देयर ओन कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी, राइट? अभी सौम्यदीप है या वंश है, मेरे साथ काम कर रहा है, मैं हम कॉलेज में साथ में पढ़ के आए हुए हैं, वंश को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, हम दोनों एक ही टीम में साथ में एक कंपनी में काम कर रहे हैं. वंश का काम करने का तरीका कुछ अलग है, भूमिक का कुछ काम करने का तरीका अलग है, हम लोग एक टीम में है. तो हमारे इंटरनली क्या हो सकता है? हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, वंश तो मेरा बहुत अच्छा कॉलेज टाइम से फ्रेंड है, सौम्यदीप भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, हम दोनों एक ही साथ में एक ही कंपनी में ज्वाइन किया. लेकिन कुछ टाइम के बाद बिकॉज ऑफ योर एथिक्स इट मे चेंज योर रिलेशन, चेंज योर लाइफ, चेंज योर कैरियर. तो हमको उसके लिए क्या करना है कि हमारा जो भी पर्सनल एथिक्स है, पर्सनल रिलेशन है, इट विल बी अ डिफरेंट पार्ट. एंड फॉर द प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म वी हैव टू फॉलो अवर ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज, राइट? कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसीज. वो क्या हो सकता है? क्या इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स रहते हैं कि आप इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड कैसे फॉलो करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं पर्सनल लाइफ में मेरा ऐसा है स्ट्रांगली फॉलोइंग कि भाई मैं यही करूंगा, तो आप सेम चीज वहां पे फॉलो नहीं कर सकते. इवन दो योर पर्सनल, आप बोल रहे हो कि मैं मेरे एथिक्स से बाहर कभी नहीं जाऊंगा, बट स्टिल you have to be change yourself because of this industrial guideline, because every industry, every organization, see, we are having a small team, right? And everyone looks very young, right?
with the after college or after like immediately you are joining here and everyone looks very young, right? So as a team हम लोगों को काम करना है, हमको एज ए टीम काम करने के साथ साथ हमारे प्रोफेशनलिज्म में हमको क्या कर सकते हैं वो देखना है, उसके लिए हमको क्या करना है. तो दिस ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, द सेम एवरीथिंग, दिस ऑल वर्ड्स, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट टू अदर्स, ये सब आप आपकी नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी, फैमिलीज में सब लोगों के साथ भी करते हैं, राइट? कि नहीं करते आप लोग, राइट? You respect your elders, even respect your youngers as well. What my feeling is, right? छोटे बच्चों के साथ आप प्यार से बात करते हैं. The same thing you can follow here, but in the professional life you have to follow the code of conduct of any organization policy. Okay. So if anyone having questions or anything, just raise the hand or just type the message. We will discuss on that as well. So what I mean is your personal life and your professional life not always the same, right? आप घर पे जो फॉलो करते हो सेम थिंग आप फॉलो कर सकते हो इंडस्ट्री में. आप हाँ, no doubt, your some ethics is there, like okay, I want to do this, but those ethics, like especially time management. Okay, this time management is very big subject actually that we can take later on. So all these things you have to be care. जब आप प्रोफेशनलिज्म में आते हैं, जब आप आपका जो भी टाइम जो दे रहे हैं, जो आप कंपनी को दे रहे हैं, या और उसको यूटिलाइज कैसे करना है, अपनी स्किल डेवलप करके. दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे के साथ मैं ऐसे करूंगा, वो ऐसा करेगा, तो उसको मैं कैसे कॉम्पीट करूंगा. कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज गुड, बट नॉट दैट वे. तो आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मैं अपने आप को कैसे डेवलप करूं, मेरी स्किल को मैं कैसे डेवलप करूं. लर्निंग आपका कैसे बढ़ाना है. लिसन एक्टिवली, एनहेंस योर एबिलिटी, राइट? Listen carefully. If someone is telling, just patiently उसको सुनो, उसको समझो, उसके पर्सपेक्टिव को समझो, फिर उसके बाद आपका रिप्लाई करो. डेवलपिंग गुड एंड पर्सनल स्किल कैसे कर सकते हैं? आप लोग मोस्टली क्लाइंट के साथ काम करेंगे, डायरेक्टली क्लाइंट के साथ आपको कांटेक्ट होना है, तो हाउ टू कनेक्ट विद देम, उसको आई कांटेक्ट में कैसे उनके साथ बात करना है, ये सब स्किल्स आप डेवलप करें, राइट? देन हेल्दी एटमोस्फियर आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं एज ए टीम. अभी आप सपोज एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो हेल्दी एटमोस्फियर आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं, एक दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं. तो उसके लिए हमको वी हैव टू फाइंडिंग द वेज हाउ टू क्रिएट दिस हेल्दी एटमोस्फियर एंड एज पैरेलल विद गिविंग द आउटपुट, राइट? सो ethics are very important, but personal and professional, we have to be segregate. We have to be identify which ethics I need to follow where, and which are the good ethics I have to continue, and which are the bad ethics, how to follow all this. So just improve a particular program, like if you are working with some software, right, as a 3D artist or 3D modeling, or as an IT developer, you are just improving your skill. तो कैसे उसको हम लोग आगे एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे एनहेंस करेंगे, उसमें हमको कुछ डेवलपमेंट लग रहा है तो हम उसको कैसे करेंगे. तो ये सब चीजों को हमको डेवलप करना है विद इन द टीम. योर पर्सनल डेवलपमेंट एज वेल एज टीम डेवलपमेंट, एंड वंस द पर्सनल एंड टीम डेवलपमेंट विल occur, ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो. और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हमको कहाँ तक लेके जाना है, हमको कैसे लेके जाना है, वो हमारी टीम के हाथ में होता है. नॉट ऑन फॉर द पर्टिकुलर वन, नॉट ओनली DC कैन डू एनीथिंग, नॉट ओनली I can do anything, right? You guys are the more important, because you are directly dealing with the clients, you are working in the team, right? So this is about your personal and professional, how to manage this personal life and your professional life, and
increase your learning skill and all. Okay, now anyone having any listen word about the टीम बिल्डिंग? कैसे टीम बिल्डिंग करते हैं हम लोग, कैसे हमको टीम को आगे लेके जाना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? आप लोगों को क्या लग रहा है? आपने एक वीक से ज्वाइन किया, एक महीने से ज्वाइन किया है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कैसे हम लोग हमारी टीम में हम लोग हेल्दी एटमोस्फियर क्रिएट कर सकते हैं, हम टीम के साथ आगे जा सकते हैं? कैसे आपको लगता है, क्या क्या कर सकते हैं आप लोग? क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं आप लोग? आप एक दूसरे के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या लगता है आपको? Anyone can just tell me. See, if I will not ask anything, maybe this is like what we can say. Just I'm telling something, you listening. Then after this finish this meeting, everyone go home. They will eat. You guys will eat and then sleep. I want something from you guys also, so I can learn from you guys as well. तो क्या लगता है आपको, कैसे आप लोगों को टीम एज ए टीम काम करना है, क्या कर सकते हैं आप लोग? चलो चलो बताओ। Proper conversations. ओके, वेरी गुड। और अपना अपना रोल डिसाइड होना चाहिए। ओके, हाँ चलो सब बताओ, अपना अपना ओपिनियन चाहिए मुझे। ओके, सो फॉर मी आप लोगों को 4 सी याद रखने हैं, 4 सी। ओके, 4 सी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी, clarity between all of you, clarity should be there, right? Second C, commitment. Whatever you are doing, whatever the hours you are spending in your work in your organization, commitment is required. Okay, so first C is clarity, commitment, contribution. What you are contributing, it is very important, and concern. Now what about the concern? So these 4 C, clarity, commitment, contribution and concern. Raise your concern. If anything you are feeling like this is wrong, okay, we can do this way, we can do this way, ask your supervisor, ask your manager, discuss with them, try to be clear on that. Okay, then give your contribution, then give your commitment on the particular project, then definitely this team will build. Always be open, transparent. Transparency is very, very important. Always be a transparent. Okay, because see, this transparency will always help you to guide if you are doing anything wrong, if you are going to another direction. Your superior or your supervisor or your manager or your teammate even will guide you. So this 4 C, if you remember, then it will develop a good team. Okay, then communication, how you are communicating, how effective communication you can do, another C. This is 5th C, right? So communication is very important part, the two-way communication, eye contact, how you are communicating to the client, right? Then time management, as I mentioned. Then problem solving skill, how you are solving the problems. Don't afraid about the problems. Problems are always there. Problems होते हैं, but हमको उसके साथ कैसे सॉल्व करने के लिए डील करना है, वो हमको ढूंढना है. अगर हमको नहीं पता है, हमारे कलीग से बात करना है, हमारे सुपीरियर से बात करना है, डिस्कस करना है, प्रॉब्लम को डिस्कस करके उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो ढूंढना है. प्रॉब्लम से भागना नहीं है हमको. ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हमारे हाथ में आया तो हम उसको अवॉइड कैसे करते हैं, कि उससे भागते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम से मुझे वो करना नहीं है, मैं दूसरे डायरेक्शन में चला जाता हूँ, मैं दूसरा कुछ कर लेता हूँ. तो ऐसे तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगे और आप उससे भागते रहेंगे, बट उसका आप सॉल्यूशन ढूंढ के निकालेंगे, देन योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज. आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि मैं प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करता हूँ, ट्रबल शूटिंग कैसे करता हूँ हर एक चीज का,
वो ट्रबल शूटिंग स्किल धीरे धीरे डेवलप होगा कब, जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आपको होगा। क्रिटिकल थिंकिंग माइंड रखो, आपका थिंकिंग जो है वो क्रिटिकल चीजों की थिंकिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट। देन टेक लीडरशिप, ओनरशिप। आप कोई प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, कस्टमर के साथ काम कर रहे हो, कस्टमर के साथ आपको डील करना है या आपके किसी के साथ डील करना है, तो टेक ओनरशिप, टेक लीडरशिप कि मैं कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, वो आपको उसके बारे में आपको देखना है। रिस्पेक्ट ईच अदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। कोई बोल रहा है तो उसकी बातें फर्स्ट हमको सुनना है। एडेप्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक कि आप कैसे एडॉप्ट करते हैं, एटमोस्फेयर को कैसे एडॉप्ट करते हैं। कि सपोज इफ यू आर ज्वाइनिंग इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन और एनीवेयर लाइक, राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, इवन मैं तो बोलता हूँ घर में भी कभी कभी आप लोग कंफर्टेबल नहीं रह पाते। मुझे even though in your family members, if you are living for long time, sometimes some scenarios are developing or some conditions are coming like you are not comfortable with, even though with your some friends or relative as well. Then आप क्या करते हैं उस कंडीशन में? आप लोग क्या करते हैं? आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्या करते हैं आप लोग? एडजस्ट करते हैं? यस प्लीज। बात करते हैं उनसे, बात करते हैं, एडजस्ट करते हैं हम एक दूसरे के साथ, एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत लिव इट, नो प्रॉब्लम, ऐसा हम लोग एक माइंडसेट रखते हैं, राइट? बिकॉज हमको एक हेल्दी एटमोस्फियर चाहिए, राइट? तो सेम चीज है कि हम लोगों को एडॉप्ट करना है जो चीज है उसको। यस, कुछ गलत हो रहा है, आपको कुछ गलत लग रहा है, यू हैव टू रेज योर कंसर्न। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, कंसर्न इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। डोंट टेक कंसर्न वर्ड एज अ नेगेटिव वर्ड। Like if always this once is always telling, always raising the concern, that means what? He is wrong? No, he is right. But what concerns you are raising, it is also very important part. So if it is really applicable, then we have to work on those concerns and we have to improve. So all this part is very, very important for building the good team. So I hope you guys will remember these all 4 C's what I have told, right? So whenever you are working, just keep in your mind. Okay. Then आप टीम के साथ अभी आप सपोज ब्रेक ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप टीम के साथ बैठो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे को समझो, वो क्या है, उसका क्या माइंडसेट चल रहा है, समझो। कभी कभी हम लोग उसमें से भी हमको एक सीखने को मिलता है। एंड एज ए टीम आप ऑलवेज रखो, एक दूसरे का सक्सेस सेलिब्रेट करो। इफ समथिंग कुछ अच्छा किया है, पांडे जी ने कुछ अच्छा किया है, तो उनको अप्रिसिएट करो, सेलिब्रेट करो उसको। तो उससे आपकी एक टीम बनेगी आपकी। ओके, एंड उसके साथ आप बैठ के आपके फ्यूचर के लिए आप डिस्कस। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप रहेंगे और उसमें ही आप आगे करते रहेंगे, बट पर्सनल स्किल डेवलप। ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हमको कमिटमेंट लेना ही है, बिकॉज दे आर पेइंग अस, उन्होंने हमको प्लेटफॉर्म दिया है। अभी यही आपका फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से आपको प्लेटफॉर्म मिला है, तो यू हैव टू शो योर मैक्सिमम टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि यहीं पे आप रहेंगे और यहीं पे करेंगे, बट योर पर्सनल स्किल इज ऑल्सो वेरी वेरी important to how to develop this your personal skill, right? So हम लोगों को हमारा रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमको क्या काम करना है, सब कुछ हमको पता है, right? Everyone knows their roles and responsibility about your job role and everything. So be open up. Okay, दूसरे से फीडबैक लो, whatever I'm working, तो मैं फीडबैक लो उससे कि भाई हाउ आई एम डूइंग। वैलिडेट योरसेल्फ,
अपने खुद को वैलिडेट करो कि मैं जा रहा हूँ, मेक योर डेली टास्क एक डायरी में कि भाई मैं मेरा जो भी टास्क है वो मैं कैसे कर रहा हूँ। अपने खुद को वैलिडेट करते रहो कि भाई मैं ये जा रहा हूँ तो ये मैं अपने आप को बराबर तरीके से लेके जा रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ इंप्रूव करना है। आस्क योर कलीग, आस्क योर सी, इसमें आपको नेगेटिविटी भी बहुत मिलती है, बट देन यू हैव टू डिसाइड कि क्या मुझे लेना है और क्या मुझे, वो एक बोलते हैं ना, एक कान से सुन लो दूसरे कान से निकाल दो, राइट। बट हर बार ऐसा नहीं करना है। एक कान बंद करके कभी कभी हमको दूसरे का फीडबैक लेके उसको पॉजिटिवली हम अपने आप को कैसे इंप्रूव करते हैं, उससे क्या होगा कि एक दूसरे की लोग हमारे एक दूसरे के साथ मिलकर हम एक दूसरे को डेवलप करेंगे और हमारी स्किल डेवलप करेंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट। और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को कहाँ पे बैकफुट जा रहे हैं? लाइक आपको लगता है कि भाई मैं यहीं पे थोड़ा मुझे इम्प्रूव होना है, उसके लिए मुझे कुछ आइडियाज चाहिए, मुझे कुछ मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मुझे कुछ करना है या मुझे कुछ चाहिए। सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एज नाउ। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज अ बिग 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 पार्ट। आप आपको पर्सनल स्किल डेवलप करोगे, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, आपको कहाँ पे ऐसा बैक कुछ लग रहा है कि मैं बैक फुट में जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा ऐसा हेजिटेशन हो रहा है कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा हो रहा है। तो वी कैन वर्क ऑन दैट एंड फ्यूचर वी कैन हैव अ मोर सेशन ऑन दैट एंड वी कैन हैव अ मोर मीटिंग्स ऑन दैट। सो आप लोग एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे। तो बताइए आप लोग, आप आपकी तरफ से भी इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे, मीटिंग सुनता हूँ, आप चल थोड़ा इंटरएक्टिव करते हैं, आसानी से शुरू करते हैं। आप अपना आई थिंक, हाँ सबको आई थिंक बोलना चाहिए अपना एक एक पॉइंट जो पूछा है आकाश सर ने कि हाँ इसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कोई ओपिनियन है तो हाँ, वन बाय वन सब बोलो। आसानी से शुरू करते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आकाश सर को बताइए, वो आपको फीडबैक भी देंगे और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको और कैसे मजबूत किया जाए वो भी बताएंगे। चलिए। Sorry, sir, actually not able to hear you properly. But although, like, I am not very much good in public speaking, so that's why, like, I thinking to work on that part of my communication skill. So the public speaking part, because I am not very good on that. So yeah, that's the one point I want to improve. Okay, so public speaking you are talking, right? So you are not that much open up to everyone, right? Means in terms of like if बहुत सारे लोग हैं उनके साथ अगर बैठ के बात करनी है, उनके साथ ओपन अप होना है, तो आप क्या क्या करेंगे तो आप वो ओपन अप हो सकेंगे बात। तो बात करने से बात बनती है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, राइट। बात करने से बात बनती है। उसके लिए आप एक आपका पर्सनल, क्योंकि देखो हम लोग एक ही एटमोस्फियर से नहीं आते हैं, राइट। हम लोग एक अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग हमारा कल्चर रहता है, अलग अलग लोग रहते हैं। अभी आप सपोज एक वर्क प्लेस से दूसरे वर्क प्लेस में जाएंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दूसरे कल्चर के लोग होंगे, दूसरे तरह के लोग होंगे। तो हमको क्या करना है, उसमें मिक्सअप होना है, उसमें तो हम कैसे कर सकते हैं, करेक्ट। फर्स्ट हमको जानना है वो कल्चर के बारे में, वो लोगों के बारे में, राइट। आप कोई भी चीज की स्टार्ट करोगे ना तो आपको क्या है कि आप कैसे बात स्टार्ट करते थे, हाय हाउ आर यू, हाउ इज गोइंग, राइट। आप वो प्लेस है, आप बड़ौदा में नए आए हुए हैं, आपको बड़ौदा का ज्यादा कुछ पता नहीं है, बड़ौदा के लोग कैसे नहीं पता है, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे उसको। तो आप पहले तो बड़ौदा के बारे में थोड़ा सर्च कीजिए कि भाई बड़ौदा सिटी है क्या, करेक्ट। तो बड़ौदा है तो भाई बड़ौदा में अच्छी यूनिवर्सिटीज है, अच्छा सेवसड़ मिलता है, सेवसल खाते हैं लोग, लोगों को ये पसंद है, लोगों को वो पसंद है। तो आप एक जानकारी लोगे, उससे क्या होगा, वही कल्चर में आप जाओगे, आप उसके बारे में बात करोगे तो उन लोगों को भी लगेगा, राइट, यस। तो ऐसे आप स्टार्टअप ले सकते हो, फिर धीरे धीरे आप सबके साथ, मैंने बोला ना टीम बिल्डिंग में यही होता है और कुछ नहीं होता है। कम्युनिकेशन आपको डेवलप करना है। तो एक आपने तरीका लिया कि मैं थोड़ा मेरा ऐसा नॉलेज, जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत मैं डेवलप कर लूंगा तो लोगों के साथ मिक्सअप होने में मुझे थोड़ा इजी रहेगा।
और हमको जो अंदर से जो हमको एक थ्रेटनेस रहती है, हमको लगता है कि हम लोग डरे हुए, मैं नहीं बोल पाता, कैसे बोलना है मुझे, वो एक रहता है, राइट। तो वो डिपेंड ऑन योर बैकग्राउंड भी रहता है, कभी कभी डिपेंड कि आपका एक नेचर रहता है, हर एक का एक नेचर रहता है, हर एक लोग एक तरीके से नहीं होते, तो उसको आपको धीरे धीरे ओपन अप करना है, डेवलप करना है, राइट। तो आप लोगों के साथ बातचीत करो, जो भी लगे। देखो, लोगों के फीडबैक के बारे में ज्यादा मत सोचो। कोई ऐसा भी बोलेगा कि भाई अंतन तो ऐसा है, वो तो वैसा है, बट थिंक इन योर ओवन वे, उसको पॉजिटिवली क्या ले सकते हो। कोई कुछ बोलता है, उसमें से 5 सेंटेंस बोलते हैं, उसमें से एक सेंटेंस पॉजिटिव लगता है, उसको आप एडॉप्ट करो, उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करो। बाकी 4 चीज आपको पर्सनल लेवल पे लग रही है कि नहीं ये तो कुछ ऐसे ही बोलते हैं, तो उसको इग्नोर करो। इग्नोर करो, सिंपली उसको इग्नोर करो। इसको ऐसा मत सोचो कि भाई वो मेरे बारे में, देखो लोग बोलने के लिए होते हैं, करेक्ट, बट पॉजिटिविटी लानी है कि पॉजिटिव उसमें से क्या है वो आपको एडॉप्ट करना है और उनके साथ आगे बढ़ना है, राइट। तो स्लोली आप लोगों से बातचीत करना चालू करोगे, एक 4 की टीम में, 5 की टीम में, फिर धीरे धीरे आप एक स्टेज पे जाके एक 1 मिलियन लोग होंगे ना, उनके सामने भी आप बोल पाएंगे। बट उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। आप सोच के बैठे रहोगे तो कभी नहीं निकल पाएंगे, राइट। ओके, It's next practice time. okay, next, anyone? I also have the same problem, like speaking publicly or with someone. I have a fear that I will offend them somehow. So, or something is wrong gonna happen if I speak up, because I may not know the person in front of me. If I get to know the person for 1 or 2 days, I get totally comfortable. But before that, it takes some time for me to like mix with the person or speak comfortably with them. That's the issue. It is purely and depend on your nature. See, some having a shy nature, they cannot open up immediately, right? But by the time being, if you understand someone, right, तो उनके साथ बात कैसे करनी है वही स्टार्टअप ही इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए देखो, मैं बोला ना कि आपको कल बड़ौदा के बारे में कुछ नहीं पता है, बड़ौदा के लोग है, अभी आप बड़ौदा वाले के लोग के साथ में आके, if you are from Kolkata, right, and if you are start working with Vadodara, Gujarat, so you have this knowledge, some Vadodians are there, you just go and कहाँ पे सेवसल अच्छा मिलता है, मुझे सेवसल खाना था यार, मुझे एमएस यूनिवर्सिटी देखना था, बहुत अच्छा है, मैंने सुना है, चलो यार चलते हैं एक दिन। यू स्टार्ट विद दैट, देन वाज ओके, इसको थोड़ा बहुत पता है, इसको है, तो एक आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हमको हमारा जो अंदर से नेचर होता है ना, वो कभी कभी हमको सपोर्ट नहीं करता है। बट दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको लाइक एक्सप्लोर करनी है। तो हमारे पास सोर्सेज भी है, बहुत सारे सोर्सेज है, और वो सोर्सेज मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप लोगों को मेरे से अच्छे ज्यादा पता है कि क्या क्या सोर्सेज है। यू आर यंग एंड यू नो द सोर्सेज, कि आप कहाँ से सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे कुछ ट्राई कीजिए, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। एनीवन एल्स? कुछ आपको शेयर करना है? ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, कुछ भी शेयर करना है, कुछ बात करनी है, तो मुझे पता है आप हाउ यू आर मोटिवेटिंग योरसेल्फ, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आप मोटिवेट करते हैं खुद को? कोई बता सकते हैं कैसे मोटिवेट करते हैं आप खुद को? क्या क्या कैसे कैसे करते हैं? I listen to songs. ओके, आपको मोटिवेशन मिलता है, राइट? ओके, वेरी गुड। देन Maybe stories also sometimes, like audiobooks. ओके ओके ओके, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। क्या करने का मोटिवेशन मिलता है? क्या आप सोचते हैं उसके बारे में? Like if I'm feeling low or something, I get to hear songs which are like empowering more, like background music scores which are good. So I go through those. It gives me a peace of mind. ओके ओके, तो अपने वंश है, किशन है, पांडे जी है, किसी को कुछ शेयर करना है? कुछ है? ओके, यू गाइस आर सी, अभी एक इनिशियल स्टेज होता है। आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है,
बाहर क्या हो रहा है वो सब सोचने से बेटर है कि सेल्फ मोटिवेट होते रहो, सेल्फ लर्निंग करते रहो, आप नई नई चीजें को एक्सप्लोर करते रहो, आपका जो फील्ड है उसमें आप डेवलप होते रहो, क्योंकि आपको फ्यूचर बहुत 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 बड़ा फ्यूचर है, राइट। तो आप बाकी सब चीजों में जाने से बेटर है अपने आप में अंदर जाओ, सेल्फ को एनालिसिस करो, सेल्फ को वैलिडेट करो और सेल्फ मोटिवेटेड रहो। आपने पूरे दिन में एक छोटी सी भी कोई अच्छा काम किया है ना, देन योर डे इज सक्सेस। आप फुल डे में एक किसी की हेल्प कर दी, योर डे इज सक्सेस। आप पूरे दिन में एक नया कुछ लर्न कर लिया ना, योर डे इज सक्सेस। तो दिन में एक बार कुछ नया लर्न करने को ट्राई करो कि मैं कुछ नई चीज आज एंड ऑफ द डे लेके जाऊंगा, कुछ नया। तो वो एक सेल्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करेगा। तो आप इस हिसाब से भी जा सकते हैं, करेक्ट। Okay, Nisit, so if anything more you want to add, we can add, or we can cover some particular topic. If you want future, we can do that as well. Okay. Yes. Anyone having any question or anything want to know, or in future, if anyone want more, then we can have a discussion as well. Yes, we can definitely conduct another seminar on deep topics. Like each topic can be covered deeply with simple training modules, so everyone can also apply that for today. Okay. If anyone else wants to speak, Brumi once, Kishan, so it will be good for team development only. So you can speak up some words, right? So we also feel that it was interactive session. You guys can provide your feedback, how you are feeling after this 20-25 minutes conversation, because see, this 25 or 20 minutes is very important for you guys as well, right? So you can provide your feedback, like how you are feeling after this one, or what you will try to do next. Obviously it's helpful for us because like a lot of people meet together and discussing on some topics. Yeah, it's very good for me. I think we should get this type of sessions in future also on specific topics. Great to know. Thank you. Okay, no problem. You guys can provide your feedback to Nizit as well. Okay, and what next you want, that also you can give your feedback. So we can have another session. And I really want to meet you guys personally as well. So hopefully soon I will come to India. Then we'll meet. Right? Okay. Yes. Okay. Thank you so much. Have a nice time. Thank you. Enjoy. Thank you. Bye. Okay, goodbye everyone.